Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As previously we have discussed about acute control of blood vessel, today we discuss about long-term control of blood vessel. Long-term control is not a rapid control of blood vessel, rather it will take weeks or months to develop, and when it starts it will persist for a longer time. Long-term control of blood vessel is done through four divisions. Number one is tissue vascularity. Tissue vascularity means a situation in which a tissue needs more blood. That tissue will have more supply of blood vessels, so that more blood flow will occur through that tissue. फॉर एग्जाम्पल एक टिश्यू है विच इज़ द मोस्ट एक्टिव वन, उसको ब्लड फ्लो की ज़्यादा ज़रूरत है. ऐसे में ये जो टिश्यू है इसमें वेस्कुलरिटी और एंजियोजेनेसिस का फिनोमेना इंक्रीज हो जाएगा. व्हाट इज़ एंजियोजेनेसिस? एंजियोजेनेसिस मीन्स मोर ब्लड वेसल्स विल form in that tissue, so that more and more blood will be provided to that tissue ताकि उस टिश्यू की डिमांड को फुलफिल किया जा सके. Number two is role of oxygen. When there is a deficiency of oxygen, as we have discussed in acute cases, there should be demand of more and more blood vessels, so that more blood will flow and this will enable the ऑक्सीजन टू रीच दैट डिमांडिंग ऑर्गन. इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है दैट प्री मैच्योर ह्यूमन बेबीज़ को ऑक्सीजन टेंट्स में रखा जाता है, और उसके बाद वहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन टेंट में एक्सेस ऑक्सीजन होती है तो वहाँ पर उनकी जो वेस्कुलरिटी है का फिनोमिना है वो डिक्रीज़ हो जाता है. लेकिन फिर जैसे ही उनको उन टेंट से बाहर लेकर आ जाता है तो वहाँ पर क्योंकि अब उनकी वो जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स है वो उस तरह फुलफ़िल नहीं हो रही, बिकॉज दे आर प्री मैच्योर, उनकी लंग्स की डेवलपमेंट उस तरह नहीं है. लेकिन अब बॉडी ने उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करेगी, और इससे ये होगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होगी सो दैट मोर एंड मोर ऑक्सीजन विल बी एबल टू फ्लो. लेकिन समटाइम्स अगर यही वेसल्स रेटिना में बन जाए, आई के वाइट्रस ह्यूमन में, और रेटिना में इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये ब्लाइंडनेस भी कर सकती है, और इस सिचुएशन को हम रेटिनोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया कहते हैं. इट मीन्स द सडन चेंजेस इन ऑक्सीजन डिमांड विल इफेक्ट the body severely, or it can cause many dangerous situation. The third one is vascular endothelial growth factor. Vascular endothelial growth factors are such factors which are responsible for angiogenesis. ये ऐसे factors हैं जो कि blood vessels की synthesis को enhance करेंगे. These are angiogenin, vascular endothelial growth factors, fibroblast growth factor. These growth factors are those growth factors which will enable that endothelium to produce more and more endothelial cells, which will cause more and more formation of blood vessels, जिसकी वजह से ज़्यादा blood vessels बनेंगी, और ये blood vessels allow करेंगी blood flow को, and when this blood flow will occur, this will supply more oxygen and nutrients to the demanding tissue. Number fourth control is by collateral circulation. Collateral circulation means many division of blood vessels are supplying the same tissue. अगर एक टिश्यू को बहुत सारे डिवीजन ऑफ ब्लड वेसल सप्लाई करें तो अगर एक आर्टरी उसमें से ब्लॉक हो जाती है तो नंबर वन कंट्रोल तो इसका ये है कि वो जो ब्लॉक एरिया है उसके बैक पर जो ब्लड वेसल्स का पोर्शन है वो सबसे पहले डायलेट होगा. उसके डायलेट होने की रीज़न ये है कि वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ब्लॉकेज, जो कि फर्दर उस ब्लॉकेज को कंपनसेट करने के लिए एंडोथीलियल सेल्स की प्रोडक्शन को भी इन्हांस करवाएंगे और वहाँ पर डायलेशंस भी बढ़ाएंगे. जब वो डायलेशन इन्हांस होगी तो जो ब्लड फ्लो है मैक्सिमली फ्लो करेगा ताकि उस ब्लॉकेज को पास ओवर करके वो नेक्स्ट जो टिश्यू है उसको सप्लाई कर सके. सेकेंड इसका मेथड ये है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होगी बिकॉज ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स. ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स क्रिएट करेंगे ताकि वो जो ऑर्गन है अगर उसकी एक वेसल कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और वो उसको सप्लाई नहीं कर पा रही ब्लड, तो जो बाकी न्यू वेसल्स हैं वो उस ऑर्गन की डिमांड को फुलफ़िल कर सके. तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उस ब्लॉक वेसल के अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स बनेंगी ताकि उस टिश्यूज़ की ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जा सके. So now we are going to discuss about nervous control of blood vessel. Nervous control of blood vessel is mainly done through autonomic nervous system. Autonomic nervous system has two divisions, sympathetic division and parasympathetic division. Sympathetic division
mostly control blood vessel. It means that it mostly concerned with control of blood flow. First, before going into its detail, first I would like to discuss with you anatomy regarding sympathetic system. Sympathetic nervous system के fibers spinal cord को leave करते हैं and then they immediately enter into the sympathetic chain. Sympathetic chain is present on both sides of vertebral column. अब वहाँ से vertebral column के बाद they pass into two routes. Number one route इनका है कि they innervate the vasculature of internal viscera and heart, and number two they will innervate the peripheral areas of body. Sympathetic nervous system does not much innervate precapillary sphincters and arterioles except of that of mesenteric blood vessel. What is mesentery? Mesentery is basically an organ which connect intestine with that posterior abdominal wall. So sympathetic nervous system mostly जो है वो mesenteric blood vessels को innervate करते हैं. बाकी सिंपैथेटिक इनर्वेशन ज़्यादा डेंस नहीं होती स्मॉल आर्टरीज, आर्टरियोल्स और वेन्स में. What is their effect on arterioles? Sympathetic nervous system mostly increase resistance of arterioles. When they increase resistance of arteriole, this increased resistance will affect the blood flow. It will decrease it, and the blood flow will decrease, but the blood pressure will increase because now the blood will exert more pressure in that narrower region. How they affect veins? Sympathetic nervous system decrease the volume of veins. It means that they mostly decrease their volume so that they can increase the pressure of the blood so that blood will be more pushed and pumped, and this will help in regulation of heart pumping. Parasympathetic system mostly blood vessels को innervate नहीं करते. Parasympathetic system mainly heart function से concerned होते हैं. पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स हार्ट को सप्लाई होते हैं और जिसके रिजल्ट में ये हार्ट की हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं. Parasympathetic nerve fibers do not have much influence on blood vessels. It means that they can neither increase the blood flow nor they have any effect in increasing the blood flow. So sympathetic system is mainly concerned with increase or decrease in blood flow. It mostly decrease the blood flow so to enhance blood pressure and help in regulation of heart pumping so that more and more blood will be pumped through heart activity. So this is all about nervous control of blood vessels. Thank you so much.